और भाई क्या हाल चाल है सबके? होप एवरीवन इज डूइंग वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. इफ यू कांट सी अभिजीत, डोंट वरी. अभिजीत विल ट्राई टू गेट हिम ऑन. वो भी बेचारा अभी भी ट्रैवल ही कर रहा है, बट विल ट्राई टू सी इफ ही कैन मेक इट. वी आर होपफुल. बट बहुत सारी चीजों के बारे में आज बात करनी है, तो अगर अभिजीत आता है तो उसके साथ भी करेंगे, नहीं आता है तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि obviously we're going to talk a little bit about Bihar, we're going to talk a little bit about Lal Singh Chadda. Lekin Kushal, I don't think we can start the episode without talking about what you shared with me this morning. तो मेरी जिंदगी बदल गई. मैं वही सोच रहा था कि मैं क्या यहाँ YouTube पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. हाँ, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई. मैं सोचा काहे को इधर टाइम वेस्ट करना है, YouTube पे इतनी मेहनत करनी होती है फालतू की. साला हम लोग भी इस तरह से आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, पेपर वगैरह लिखते हैं, आराम से पैसे कमाएंगे, ग्रांट वांट अच्छे मिलेंगे हम लोगों को, हम लोग भी जाके यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके रहेंगे. तो जरा जरा दिखाओ लोगों को कि what it is exactly that we are talking about right now. So before background, so this was sent to me. This was sent to me yesterday, I think, by a friend of mine. नाम disclose नहीं करूंगा, उसके लिए, मेरे लिए नहीं. और भेजा गया कि देखो क्या क्या डिस्कशन हो रहे हैं. तो उसने तो स्क्रीनशॉट भेजा. मैं इतना यूजलेस आदमी हूं, मैंने वो पेपर डाउनलोड करके पेपर पढ़ लिया. 10 पेज का पेपर है, मतलब 9 पेज पढ़ने हैं, और मेरी जिंदगी बदल चुकी है अब ये पेपर पढ़ने के बाद. ये पेपर पढ़ने के बाद ये है वो पेपर. ये पेपर है क्वालिटेटिव रिसर्च. sagepub.com पे ये पब्लिश हुआ है. ये एक्चुअल पेपर है, पीयर रिव्यू This is a real paper. हाँ. और इसका I am not alone, we are all alone, using masturbation as an ethnographic method in research. Ethnographic method on Shota subculture in Japan. भाई, कार्ल एंडरसन स्कूल ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूके. देखो मेरी डेडिकेशन. मैंने अच्छा ये हाईलाइट भी कर रखा है. मैंने हाईलाइट करके रखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो पेश किया है एब्स्ट्रैक्ट. I wanted to understand how my research participants experience sexual pleasure when reading Shota, a Japanese genre of self-published erotic comics that features young boy characters. Todi Manu. की होता पे है, पेश किया है. I therefore started reading the comics in the same way as my research participants had told me that they did it while masturbating. मेरा कार्ल भाई से मेरा एक ही ये एडवाइस है. कार्ल भाई, हिलाना है तो हिला लो, इतना बहाना बनाने की क्या जरूरत है? इतना सिर्फ हिलाने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? चुपचाप घर में बैठ के हिलाओ ना यार. हम लोग साला कोई अनाउंस थोड़ी करते सोशल मीडिया पे जाके. देखो भाई, हिलाना है तो हिलाओ यार, इतना साला कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? चुपचाप यार, हे भगवान. अरे कुछ भी, ये तो कुछ नहीं है. आगे देखो, आगे दिखाओ. ठीक है. ये मतलब ऐसा दिमाग को हिला देने वाला है. एरोटिक कन्फेशंस हैं जी, एरोटिक कन्फेशंस है इधर. By the way, इन्होंने बेसिकली साला 50 शेड्स ऑफ ग्रे पब्लिश कर दी है दूसरे तरह की, और कह रहे हैं कि मैं ये एकेडमिक पेपर है, मेरे को पैसा दो. ये देखा, masturbation as a method. For a period of 3 months, I would masturbate only to Shota comics. Dedication देखो भाई बंदे की. बस कर भाई. For this purpose, I would use doujinshi and commercial volumes that I have bought or been given during field work in Japan. In short, I would masturbate in the same way that my research participants did it. After each masturbation session, I would write down my thoughts and feelings, a kind of critical self-reflection in a notebook, as well as details about which material I had used, where I had done it, at what time, and for how long. थॉडी मानू. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट.
मुठ मारने के बाद हाथ तो धो लिया था किसी ने, वो भी नहीं किया। नहीं वो भी नहीं करता, ट्रेडिशनली है ना, ट्रेडिशनल आदमी है, जैसा जापान में करते हैं वैसा हम करेंगे। जैसा जैसा जीजा जी बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। ये जापान वाले इनके जीजा जी है। ये देख, हिला ले पाकिस्तान। पाकिस्तान, हिलाले एंडरसन बोलना पड़ेगा इसको। हिला ले कार्ड। हाँ, हिलाले एंडरसन बोलना पड़ेगा इसको। अबे साला, मेरा ऐसा मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गया जब मैंने पेपर पढ़ा। मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ब्रेवरी अवार्ड दो फिर। Why the long period and the strict rules of masturbation to only 2D material? बहन का टका मटेरियल भी उसमें डिसाइड किया उसने। Because ethnographic fieldwork demands such consistency in order to yield results in form of a thick description of the field. बस हो गया कार्ल भाई, पेपर, शाबाश, वेरी गुड। डेडिकेशन, काल की डेडिकेशन, बंदा पट्टे की मारनी पड़ेगी। It was therefore imperative that I kept living within my own 2D world during this sexual fieldwork without resorting to my usual 3D material, which I sometimes longed for. Sacrifice देखो बंदे का। In that sense, I felt that I was in the physical field of another culture. वाह भगवान, वाह, बस भाई बस, हो गया, हो गया कार्ल भाई। अरे बस, चैनल बंद हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। और करवाओगे तो चैनल ही बंद हो जाएगा। ये साले हरामजादे यहाँ पॉर्न चैनल चला रहे। ऐसे ही मेरा पिछले हफ्ते पॉर्न वाला कैमरा एंगल था, अब यहाँ पे हम सीधे सीधे पॉर्न की बात कर रहे हैं। I experience a sense of self-care, which I also call the spa effect. ये क्या आदमी है भाई। ये देखो, अब बस चैनल बंद। What I learned from this ये आदमी चैनल बंद करवा was to attach greater meaning and value to the act of masturbation. Carl, you are a credit to your country, Carl. Carl has converted to motism. Carl नए प्रॉफिट बनने वाले हैं लगता है, एक तरह के। He's going to be one of those new age gurus. ये अपना नया कल्ट खोलने वाले कहीं पहाड़ वहाड़ में, बोलेंगे आओ छोटो कॉमिक्स देखते हैं और एंजॉय करते हैं सारे मिलके। हे भगवान, what a start to the podcast. What a start to the podcast. This is what I woke up to in the morning. मेरे को कुशल से मैसेज आया, ये देख। सुबह सुबह उठ के मैं यही देख रहा था। तो मैंने भी तो सुबह सुबह उठ के यही देखा। सुबह सुबह इनको भी यही मिला। मैं कहा यही रह गया अब लाइफ में, यही देखना रह गया था। समझ जाए करो, इन्हीं कॉलेजेस से क्रिटिकल कास्ट थ्योरी आ रही है बेसिकली। यही लोग साले I'm going to read some sacrifice अप्रिशिएट करो मेरा कि थर्सडे शो के क्या क्या ढूंढ के लाता हूँ मैं। बीजेपी गॉन फ्रॉम बिहार, आई वाज सो हैप्पी। कल रात को मैंने कौवा बिरयानी बनवाई थी। अबे ये अभिजीत है किधर यार, पता नहीं। ये आएगा तब तो इसकी वाइफ को, अरे उसकी इंटरनेट की माँ बहन एक हुई पड़ी है यार। अबे सिर्फ ऑडियो से आ जाए, मैं तो उसको बोल देता हूँ कि सिर्फ ऑडियो से आ जाए भाई, स्क्रीन भी मत दिखा। हाँ, उसका इंटरनेट की माँ बहन हो गई है उसकी, पता नहीं। अपेरेंटली आई थिंक इज एट हिज हाउस इन चेन्नई, द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, उसने बोला है। अच्छा, उसकी इंटरनेट नहीं चल रही फिर से। हाँ, तो अभी क्या अरे वो जब भी ट्रैवल करता है ना तो उसकी इंटरनेट का हाल मेरे जैसा ही हो जाता है। जो मैं 2 हफ्ते ट्रैवल करने के लिए गया होता तो मेरे इंटरनेट का भी मदर सिस्टर हो रखा था, तो यही हो जाता है। और खासकर इंडिया के होटलों में पता नहीं वाईफाई की क्या तकलीफ है, नहीं यार ठीक तो है, पता नहीं कौन सा तूने होटल सेलेक्ट चलता ही नहीं है। मैं इतनी कोशिश की कि कम से कम यार एक लाइव स्ट्रीम तो हो जाए, थोड़ी कट के भी हो, लेकिन लाइव स्ट्रीम तो हो जाए, लेकिन यार चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या तकलीफ थी। नसीब से मतलब wherever I have traveled and I have traveled a lot, कि I've been lucky as far as the internet is concerned. ये देखो क्या बोल रहा है कोई, किधर गया? अरे यार कमेंट, हम छोटो कमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए अभी तक नहीं आया।
ये देखो हराम खोरों को देखो, नीड सम शो को रिकमेंडेशंस, थैंक यू। अब ये ना मेरे को कनाडा में कोई अंकल मिलेगा, हरामजादे मेरे बच्चों को बिगाड़ रहा है थर्सडे के शो में। लोग बोलेंगे पापा देख रहे हैं, पापा सुन रहे हैं। मैं तो उसको रिटर्न में लूंगा, आप क्यों देखते हो हमारा शो? या आप भी आप तो आ पकड़े जाते हो गए। देखने के लिए रोज रोज। तो अपेरेंटली मैंने अभी तक तो देखी नहीं है, पता नहीं, मैं शो के लिए सोच रहा था जाकर देखा हूं, लेकिन अब मैं डिबेट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा कि मेरे को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। छोटा नुनू। छोटा मैं डिबेट कर रहा था शो के लिए कि मेरे को जाकर देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, बट बेसिकली ये लाल सिंह चड्ढा के बारे में बहुत न्यूज चल रही है आजकल। मैंने सुना है कि बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं रही है अभी तक, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल। एक मिनट, लेट अस आस्क द क्राउड यार, लाइव स्ट्रीम, हु हैज हाँ, वॉच्ड लाल किसने सिंह जाकर चड्ढा? देखी है लाल सिंह चड्ढा अभी ऑनेस्ट तक? आंसर दो यार, बिकॉज मैं तो देखो पिक्चर देखता नहीं, आई विल नॉट कमेंट। हाँ मैं पिक्चर देखता नहीं, मैं तो जाता ही नहीं पिक्चर देखने, तो मेरे को कुछ मालूम नहीं। हाँ। अगर ईमानदारी से किसी ने देखी है बताओ। एंड ग्रेट न्यूज, मेरा ये जो बॉटल की टूटी है वो टूट गई, अब मेरे को अरे इसको नहीं नहीं, ढक्कन खोल के पानी। टूटिया हो गया। हाँ, अरे वाटर ट्रेन रेक, अभी मेरे को पानी ऐसे पीना पड़ेगा। पानी से पीना पड़ेगा। और बना लो, लोग इसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके फोटोशॉप करते रहेंगे और मुंह खोल खोल के पानी पियो, क्या लोग करे, फोटो अभी करेंगे। टूट गई, टूट गई। टूट गई। बट बेसिकली खबर तो ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं है। मेरे को डिस्कॉर्ड पे मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो वो लोग एक बंदा उसके बोल वो रहा भेज। है एवरेज मूवी है, मतलब इसने देखी है, एवरेज है। अच्छा, उसने देखी है, शाबाश। मैंने एक चीज सुनी है यार, एक चीज सुन के मेरे को बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं, फॉरेस्ट गंप देखी है आपने? बेसिकली फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, फॉर पीपल मैंने दैट डोंट फॉरेस्ट नो। गंप भी नहीं देख, ऑनेस्टली यार, मैं तो इतनी पिक्चरें है ना, हाँ। और मैं इतना देखता नहीं हूँ। फॉरेस्ट गंप भी मैंने देखी नहीं है। फॉरेस्ट गंप मतलब मैंने इक्का दुक्का सीन देखा होगा, मगर मैंने पूरी पिक्चर बैठ के देखी नहीं है। तो ये लाल सिंह चड्ढा क्या मतलब, बेसिकली इट इज अ रीमेक ऑफ द फॉरेस्ट गंप। लाल सिंह चड्ढा बेसिकली इज रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप। बेस दैट समथिंग दैट इवन आमिर खान हैज एक्सेप्टेड कि ये तो बेसिकली फॉरेस्ट गंप का रीट्रेड है। एंड द शेम इज कि जो व्हाट एटलीस्ट व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, इसके फॉरेस्ट गंप में देयर यूज्ड टू बी अ रियली ग्रेट कैरेक्टर कॉल्ड लिeutenant Dan. Lieutenant Dan was a very tragic character that has a very interesting arc in the entire movie, but apparently that Lieutenant Dan has been converted into a Pakistani soldier, Pakistani captain or Pakistani soldier, जिसके साथ obviously Amir Khan's Lal Singh Chadha becomes very fast friends and peace and brotherhood, और आपस में अमन की आशा का संदेश देते हैं। ये संदेश साला 20 साल से इतना स्टेल हो रखा है फिर भी, लेकिन ये जो बुजुर्ग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ये देना नहीं भूलते ये ज्ञान हम लोगों को। एंड अपेरेंटली इन अ लाइन ड्यूरिंग द फिल्म, ये पाकिस्तानी बोलता है कि यार मैं तो 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, लाल तू क्यों कुछ नहीं पढ़ता? तो लाल सिंह चड्ढा बोलता है नहीं नहीं यार, ये सब तो पूजा पाठ में कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से तो सिर्फ दंगे होते हैं, इसलिए मैं पूजा पाठ वगैरह नहीं करता, क्योंकि पूजा पाठ करने से सिर्फ दंगे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। बट अब ऐसी फिल्म को पॉइंट ये है कि उसने तो फिर अगर एकदम दूसरे तरीके से देखे तो लाल सिंह चड्ढा तो उसकी पूजा पाठ को भी तो क्रिटिसाइज कर रहा है ना, मुसलमान की। apparently you would like to think so, but Lal Singh Chadda box office collection day 1, Amir Khan starred makes a dull opening, 15 to 20% occupancy for morning shows, trade in shock. अब ये भी हो सकता है। आई थिंक वन थिंग यू नीड टू कैवियाट व्हेन यू शो दिस, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वन थिंग यू हैव टू कैवियाट व्हेन यू शो दिस इज कि ये इंडिपेंडेंस डे के आसपास का टाइम है। इट्स पॉसिबल कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डे द बॉक्स ऑफिस माइट पिक अप। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ ट्रेड एक्सपर्ट, बट ये कभी और कभी देखो, होता है कुछ फिल्मों में। I would be very skeptical of any claims that because social media trended boycott Lal Singh Chadda, the movie flopped. It could just be the movie It could sucks. just be that the people just don't have an Because interest in this film. because let me tell you, दंगल के टाइम पे भूल गए हो लोग, 2 महीने पहले आमिर ने वो स्टेटमेंट दी थी, इंटॉलरेंस वाली या कौन सी हाँ वाली आमिर ने दी थी, और हाँ लोगों ने तभी बॉयकॉट, दंगल भी बहुत हुआ था, याद है ना?
तभी भी हुआ था. दंगल वाज अ Yeah, सुपर डुपर हिट. super duper hit. तो भैया अगर पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी, तुम्हारे सोशल मीडिया के रंडी रोने से कुछ नहीं होना. Yeah, और अगर सुपर फ्लॉप होनी है तो सुपर फ्लॉप होनी है. flop होएगी. हाँ. अब बेसिकली प्रोडक्ट अच्छा होगा तो चलता है, प्रोडक्ट गंदा Yeah, होगा तो नहीं चलता. तो yeah. अगर लाल सिंह चड्ढा अगर अच्छी मूवी होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी. और ये अक्षय तुम्हारे कुमार को भी सोशल देख लो मीडिया से ना. कुछ नहीं अक्षय होता. कुमार भी बेसिकली टू फेस हैं. बैटमैन के टू फेस हैं. आधे टाइम ये नेशनलिस्ट हैं, आधे टाइम ये कुछ और ही करते रहते हैं. तो उनकी भी फिल्म अगर तुम देख लो, अगर अच्छी फिल्म है तो चल जाती है, अच्छी फिल्म नहीं होती है तो नहीं चलती है. पृथ्वीराज नेशनलिस्ट फिल्म थी कि नहीं थी? हाँ. पिट गई ना. पृथ्वीराज ऑनेस्टली तो मेरे को उतनी बुरी भी नहीं लगी थी. आई डोंट नो व्हाई पीपल, पिट गई आई कैन ना, अंडरस्टैंड पीपल मे हैव फाउंड इट अ लिटिल बिट बोरिंग एट पॉइंट्स, बट आई डिडंट इवन थिंक इट वाज सच अ बैड फिल्म. पिक्चर पिट गई ना. हाँ, एग्जैक्टली. ये जो लॉजिक है ना. उसको तो बीजेपी ने भी प्रमोट किया था पिक्चर को, हाँ, तब भी बड़ी. पिट गई भाई, पिट गई. मान लो ये जो तब भी पिक्चरों का, पिट गई. मान लो ये जो पिक्चर का चलना और Yeah. ये चीजों में कोई कनेक्शन होता नहीं है. इट हैज वन हैज नथिंग टू डू विद द अदर. टट्टे इडली वर्जन ऑफ फॉरेस्ट गंप. तो वही है. I honestly don't know कि unless you know it reaches like mainstream media, जो normal अखबार है उसमें अगर जब तक नहीं आ जाती ये बात, तब तक I doubt कि ट्विटर पे ट्रेंड कराने से, which has a small, pretty small user base compared to the population of India, ट्विटर पे ट्रेंड कराने से you can actually make people not go and watch अच्छा, a film. I don't think ट्विटर से अभी इलेक्शन तक रिजल्ट कितना होता है. डिसाइड नहीं हो सकते. सेम लोग जो बोलते हैं ट्विटर से फिल्म डिसाइड होती है, वही सेम लोग बोलते हैं ट्विटर से इलेक्शन इलेक्शन ही डिसाइड डिसाइड नहीं होते हैं. होते. हाँ, वो बात आई भी मीन है. इट नथिंग मेक सेंस एनीमोर. ये देखो क्या होता है कि जैसे लेफ्ट विंग सर्कल जर्क्स होते हैं ना, वैसे राइट विंग सर्कल जर्क्स भी होते हैं. ये एक राइट विंग सर्कल जर्क. ये भी जिफ बनने वाला है. गुड लक. इसका भी लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके जिफ बनाने वाले हैं. बकवास. देखो, मैं तो, मेरे को तो कोई अक्यूज नहीं कर सकता कि मैं बॉलीवुड एनेबलर या डिसेबलर हूं. Yeah. मैं तो देखता ही नहीं हूं. मैं Yeah. तो आज से नहीं, मैं तो 15 साल से देखना ये बकवास बंद कर चुका हूं. मेरे तो दिमाग में बैठती नहीं है हिंदी सिनेमा. मैं नहीं देखता. केजरीवाल ने आमिर को यूट्यूब पे डालने को कहा है. फ्री हो जाएगी. यूट्यूब पे डाल दे भाई. So yeah, YouTube पे डाल दे. I honestly don't understand all this. I don't care if it does well or does poorly. That's my whole thing is I don't give a shit. But let me tell you, people who accuse right wing of canceling, they are wrong, because Yeah. the people in the left are the bastards of the highest order. They have been canceling the shit out of everyone No, since they have time been immemorial. canceling, and the thing is, nobody is saying, as far as I have seen, nobody has said कि Amir Khan should not be allowed to make films anymore. Mhm. People have said मैं नहीं देखने जाऊंगा. People have said let's make a decision to not go and watch this film. Nobody has said कि remove. Maybe some people have said that, but the majority of people are not saying remove the film from theaters. They're not saying ban Amir Khan. They're not saying ban Lal Singh Chadda. They're not saying any of those things. They're saying मेरे को नहीं देखनी, मेरे को ये आदमी नहीं पसंद, मेरे को इस आदमी की फिल्में नहीं पसंद, मैं नहीं जाऊंगा देखने. That is the overwhelming sentiment from the quote unquote right on social media. There's nothing wrong with that in my opinion. वो भी नहीं देखनी बोलने मत के लिए देखो. होता है. सब जाके देखते हैं. देखो, और एक मैं बात बोलूं. नहीं, I'm मेरे just को saying तो there's nothing wrong with that. मेरे को That's तो not cancel culture. आप नहीं देखना चाहते किसी फिल्म को, that's not canceling the film by the way. जैसे अगर मैंने वीडियो रिलीज किया और लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, that doesn't mean I'm being, that just means people did not want to watch the video. Yeah, and not only that, at the end of the day, if Amir Khan has a right to feel that India is intolerant and say that, people have a right to say we don't want to watch your movie. So it's you live by, it's the sword you live and die on. It's a double-edged sword, whatever you want to do. But Yeah. what I have a problem with is correlation causation issues bahut hain ki because people made noise on social media, the movie tanked or something. That is the part which I am saying I have not seen the evidence. Yeah. And I don't want to do anything with it, so I'm not going to comment on it. But as far as all these other peripheral things, of this is concerned, I could care less. People, look, like I said, people can say what they want to say, people can do what they want to do.
Yeah. As long as they don't stop Amir from making movies, I don't give a shit. Yeah, I don't really care. If the Indian state stops Amir Khan from making movies, is when I have a problem. Yeah. The Indian state has nothing to do. You Yeah. as an individual And don't nobody want to and nobody watch. has any problem with Amir Khan, yaar. Are people are saying कि Amir Khan को ये करो वो करो. Amir Khan said all these things that he said about Modi. He said Modi ने genocide किया, Modi ने ये किया, इतने लोगों को मारा. Basically implicated Modi in the 2002 riots on an interview with Shekhar Gupta. Many years after that, Amir Khan, मोदी जी ने ही बुलाया था ना आमिर खान को मिलने के लिए. ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे उन्हीं के साथ. अरे यार, आमिर और शाहरुख दोनों की सेल्फी है मोदी के साथ, तो यार दोनों मोदी की को सेल्फी है प्रॉब्लम नहीं मोदी है. के साथ. तो तुमको क्या ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत यार? है. हाँ Yeah. यार, फिर वही तो मतलब पॉइंटलेस है ये चीजें. देखो, मैंने बोला ना, ये सब चीजें पॉइंटलेस होती हैं. आपको पिक्चर देखनी है आप देखो, Yeah. आपको नहीं देखनी है आप मत देखो. Yeah. आपको अनाउंस करना है, दुनिया को बोलना है कि नहीं देखो, प्लीज करो. Please मैं तो करो. वैसे Yeah. ही नहीं देखने वाला, मुझे कुछ Yeah. फर्क ही नहीं पड़ता. Yeah. Yeah, exactly. तो let's see कि इसका बॉक्स ऑफिस कैसा होता है. I think it's too early to say because अभी तो एक ही दिन हुआ है. Let's see कि 2-3 दिन में by the time Independence Day rolls around तब तक क्या होता है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस होती है. तो I think that's a better time to make a objective call on कि whether the movie is doing well or the movie is not doing well. In the meantime, नहीं, बिहार पे एक भी आते हैं लास्ट जरा. में लाइन हाँ बोलूंगा. हाँ राम बोलो. ने बहुत अच्छा ट्वीट लिखा था कि maybe if a movie does bad, it is just about how bad overall Hindi cinema is becoming. Yes. Nothing to do with cancel culture. That's true. आप देखो, I want to give a shout out to this film because A, I love this film. B, everybody in the West seems to love this film as well. It's an Indian film, RRR. ये जो राजामौली की film है. That film, for people that are living in India, for people that do not live outside of India, I don't think people realize this. But that film is an absolute phenomenon in the West. I don't think people realize this, but there's a huge YouTube channel, बहुत समय से बहुत पुराना YouTube channel है, and it makes this thing called honest trailers, and it makes like parodies of like films in a trailer form basically, and it's a very popular series on YouTube. Honest Trailers only covers Hollywood films. It's the first time they've ever covered an Indian film in 10 years of doing these reviews, and they covered RRR. And RRR is being shared by Hollywood actors, Hollywood writers, like big wigs in Hollywood. Everybody's sharing it. People are liking it. And it shows you that people do not act this way about Hindi films, by which I mean the Mumbai film industry. They are not reacting this way about any recently released Hindi films. They react this way about RRR because in at least the popular imagination for the time being, it is possible that Hindi film industry, course corrects and goes back to, making popular films. But at least for the time being, in the popular imagination, these so-called regional films are the new mainstream. इनको समझ में आ गया है कि पब्लिक को क्या चाहिए, and they have tailored their films to providing exactly what the public wants. Whereas the Hindi film industry is I feel like it's very hyper focused on making sure कि हमको critics like us. All the Times of India के critics, the Hindu के critics, NDTV के critics, Film Companion हमको like करे. That's the most important thing for us. Indian public like करे कि नहीं करे, we don't care about that. ये पिक्चर देखिए जो आ रही है. हम दो हमारे पास. Population Explosion in our country. It has been produced by Ravi Gupta, Birendra Bhagat, and Sanjay Nagpal, directed by Kamal Chandra. Yes, shabash. This is a parody handle of Anu Kapoor. This is not Anu Kapoor, मगर ये picture actual में आ रही है ऐसा बोला गया है. This is a real film. I think I've seen the poster somewhere. Yeah. ये picture भी some आ रही people है. were saying कि ये film, how dare you allow this film to be made? राणा यूब ने तो ट्वीट किया था ना. राणा ने, how dare you allow this film to be made? Yeah. अरे मैडम, पीके बन गई, कोई तकलीफ नहीं है. हजार तरह के मजाक उड़ गए, हिंदू भगवान पे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम दो हमारे 12 कैसे बन सकता है? हम दो हमारे 12 becomes Islamophobic. इस्लामोफोबिया है भैया. मतलब what has बच्चे पैदा करना got to do with Islamophobia is something that I don't know. Yeah.
So yeah, that's what I have to say about Bollywood movies at this point. Okay, Bollywood movies are made for critics and a little circle of people who are supposed to jerk each other off and tell each other how good of a job they're doing. Whereas the so-called regional films that are now basically the mainstream, they're the ones that are made for the mass audience. They're the ones that are making the big bucks. So more power to them and good luck to them until and unless Bollywood changes its track. Um, जी- हाँ क्या कह रहे थे? नहीं, मैं वही बोल रहा था कि आई थिंक लेट मल्टीपल आइडियाज प्रिवेल Yeah, and whatever is the best in the battleground of ideas will win. So all this drama about people who want to boycott can boycott, yeah, people who want to watch can watch, people who want to cry Islamophobia can cry Islamophobia, yeah. as long as the government of India does not ये देखो, I am offended because even after message me and Abhijit are हम दो हमारे hero. क्या फोटो लगाइए यार. अरे I am अम्मा. offended. But बिहार पे भी जरा आते हैं तो हाँ. let's talk a little bit about बिहार before we do memes. Yes. पता नहीं अभिजीत लगता है आएगा ही नहीं आज. हम्म. आज इसका इंटरनेट चल ही उसका नहीं रहा इंटरनेट लगता है. गया यार, वो क्या करे अभी, बेचारे का इंटरनेट सॉरी गया यार, तो उसको गलती फॉल्स नहीं. एडवर्टाइजिंग हो गई आज हमारी थोड़ी. अभिजीत को भी डाल दिया था थंबनेल में, बट नेक्स्ट वीक यार मैं उसको घसीट के पर्सनली ले आऊंगा, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग हिम ऑन द शो. No, he was होपफुली going to come, but he said his या internet is choppy. उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है अभी. ही इज टेलिंग अस कि उसका इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा है. आई थिंक ही इज एट हिज फैमिलीज प्लेस और समथिंग एंड हिज इंटरनेट इज रियली शिट. बट we'll try to get him either this week or next week for sure. हाँ यार, आज क्लिक बेट हो गया. मेरे को लग रहा था वो आएगा. किधर गया? मेरे को लग रहा था वो आएगा बट वो आया नहीं, तो आज थोड़ा क्लिक बेट हो गया. कोई बात नहीं, I'll change the thumbnail after the podcast as well. But in any case, coming back to बिहार, तो बिहार में तो यार बीजेपी रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वो बॉयफ्रेंड नहीं होता है जिसकी गर्लफ्रेंड बार बार उस पर चीटिंग करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड बोलता रहता है कि नहीं देख, बट शी इज वेरी नाइस, शी इज सो प्रिटी, देख कितनी सुंदर है, कितनी ये है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, लेकिन बार बार उसको छोड़ के किसी दूसरे लड़के के पास भाग जाती है. सो आई थिंक वील हैव टू इन अ वे, आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द बीजेपी अनडाउटेडली, कि ठीक है ना, एक तुम्हारे पास एक इतना कैंसरस पार्टनर था, who by the way isn't really adding anything to the coalition. Nitish Kumar's only goal has been to stay chief minister of Bihar and to somehow become the prime ministerial candidate of the Gadbandhan every 5 years, of the Mahagadbandhan every 5 years. That is his entire political aspiration. आप देखो, कितने साल हो गए उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए, कितने साल, एंड उतने सालों में has he been able to grow जदयू outside of Bihar? क्या है प्रोफाइल जदयू का बिहार के बाहर? जहां जाते हैं हारते हैं, जहां जाते हैं पिटते हैं, more or less. So outside of Bihar, that party has no presence. So does it behoove the BJP to keep an alliance with a party that basically has no prospects outside of Bihar? And ab to unhone, the funny thing somebody mentioned was, and this ties into Maharashtra as well and what happened in Maharashtra recently, इसके अगर आप कुशल महाराष्ट्र को देखोगे तो ठीक है, what उद्धव ठाकरे did was to at least help his own family. Uddhav Thackeray broke the alliance with the BJP, broke the public's mandate to at least help himself and his son, help his family. But somebody made a very good point कि Nitish Kumar broke the alliance to help Lalu's family, arch rival's family. Abhi to he's joined up with Tejaswi Yadav. How long is Nitish Kumar going to be politically relevant? Basically तो वो मदद कर रहा है तेजस्वी यादव की. And now Tejaswi Yadav is coming out and giving statements कि हम तो चाचा भतीजा हैं, ये किसी दूसरी पार्टी की मदद थोड़ी करेंगे, ये तो अपने भतीजे की मदद करेंगे. So there's no succession planning as well. It seems कि Nitish Kumar is basically handing whatever Jadyu has to RJD on a platter. So I don't know how much sense this alliance made in the first place, but अब ये alliance खत्म हो गया है, तो वो होता है ना कि there's no way but up. Zero के बाद तो सीधे अब 1 या 2 या the number will only increase. So I think this is a good opportunity for the BJP to develop some good leadership. 9 साल से उन्होंने कोई ढंग का लीडर डेवलप नहीं किया है बिहार में.
अब मौका है, अब दम लगा के काम करो 5-6 साल और लीडर डेवलप करो. I don't know what you think about the whole situation. No, I agree. As far as as far as the political landscape of Bihar is concerned, BJP has no other option but to go up now, and BJP is going to go up in that sense. But why did they tie up with Nitish Kumar? Yeah, it's obvious that the reasons are obvious. Everybody I think likes it was power. 20, क्या हुआ ना 2015 में, आपको अगर याद है, what happened in 2015, BJP performed really poorly because they went it alone in 2015 in Bihar. And so they performed really poorly, तो उनकी फट गई and they said कि अरे नीतीश जी please हमको बचा लो. But in 2020, fine, they fought with Nitish, but in 2020 they performed really well. And that should give them hopefully a little bit of confidence कि यार अपने बूते पे भी अगर हम perform करें तो perform किया जा सकता है. Whether they do it or not is a different matter. See, Nitish Kumar ka to I don't know. I mean, the less we say, the better. I mean, the person keeps Yeah. he keeps going from one place to the other, to the other, to the third, to the fourth, to the fifth, to the sixth. I mean, what do you say, man? Yeah. I mean, what is happening in Bihar is hilarious. Now the man was the CM. Now he's no longer the CM. Now there will be a new CM. Then something else will happen. Then maybe he will have another change of heart. Then he will again go back to the BJP. It's all Yeah. a mess. You don't know what's happening. Nobody knows what's happening in Bihar. If the BJP is sensible, the BJP should go alone in Bihar. BJP can take 1 or 2 electoral losses in Bihar at a state level, because at the national level, BJP will see state voting patterns and national voting patterns do not overlap all the time. And the mathematics changes, right? When it's a Delhi bigger and Bihar are great constituency. examples of that. Yeah, so people need to be very practical here. I don't know. See, the BJP, a person who is a BJP insider and a BJP apologist will say, but no, being in power is more important. So them going with Nitish Kumar was better. I don't know. I think you should look at long-term power in the state, and Bihar is, Bihar is reeling, man. The state is in a shambles. It is in a shambles. मैं तो होके आया हूँ यार, अभी recently होके आया हूँ, and you look at a state like Gujarat. If you're from Bihar and you go to Bihar and then you travel to a state like Gujarat, I can't blame you for feeling jealous. I can't blame you for feeling insanely jealous, because those two states are on completely different trajectories. Yeah, it's terrible the way things are in Bihar. Look at the economy of Bihar. Look at the condition of Bihar. UP is making a lot of improvement, and Bihar, I don't know what to do. You know what UP is doing, which I think is really smart, and what Bihar has still not been able to do in so many bloody decades, is UP is developing multiple cities, multiple large cities. वो सिर्फ या तो कानपुर या लखनऊ में फोकस नहीं कर रहे हैं. They're developing multiple cities across Uttar Pradesh, जिनको ये they're trying to develop them as metropolises. But if you look at Bihar में क्या है? सिर्फ पटना है. Bihar only has Patna. A state with 200 million people or something like that, 180 million people, a ridiculous number of people, has only one major city. And you can't really call Patna a metropolis. Patna is just a very fat small town. It's an overburdened small town is what Patna is. And for a state with this many people, आपने एक ही ऐसा शहर है जिसमें थोड़ी सी opportunities हैं, थोड़ा city का infrastructure है. So hundreds of millions of people from all over Bihar are converging on this one central spot. And because Patna is basically like an overburdened small city, it is getting more and more overburdened with every passing year. The infrastructure is collapsing. उस शहर में ग्रो करने का वो ही नहीं है ना. इतना घुटा हुआ है वो शहर कि उसमें ग्रो करने का कोई प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है. Until and unless you develop 3 or 4 other cities, proper cities in and around Bihar, तब तक ये जो overburden हो रखा है पटना का, ये खत्म ही नहीं होगा. The traffic is anywhere you go, traffic in Bihar is just, Patna is just crawling because जगह ही नहीं है. जगह ही नहीं है. Everything is clogged because everybody from Bihar is in Patna. So the state is in a very bad place, and BJP is a smart party. They've done well to develop good, strong, organic leadership. Either they've developed it themselves or they have brought those leaders in from other parties. But they've developed strong
local leadership, आप असम को देख लो, आप महाराष्ट्र को देख लो, obviously UP is a big glaring example right there. And I think Bihar में भी possible है. बिहार का हिंदुत्व is much stronger than people give it credit for. People think कि अरे ये तो आरजेडी को वोट करते हैं या जदयू को वोट करते हैं, इसका मतलब कि इनका हिंदुत्व वीक है. ऐसा नहीं है यार. बिहार का सबसे साला ठेठ हिंदू होता है. बिहार का हिंदू बहुत कट्टर है. It's just that they don't see a focal point to rally around. In लोकल Uttar Pradesh you लीडरशिप can see लोकल लीडरशिप भी तो चाहिए ना. लोकल लीडरशिप भी तो आप चाहिए ना. मोदी करके कितना कर लोगे. आपको हाँ. लोकल लीडरशिप तो चाहिए ना. जैसे यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप है ना, और भी लोकल There's लीडर a है. focal point to rally around कि you can rally around this leader. बिहार में कौन है? Who inspires you from the BJP to rally around? कौन है? सुशील मोदी जी. अरे सर माफ कर दीजिए. माफ कर दीजिए सुशील मोदी जी. उनसे नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली. एंड टू बी ऑनेस्ट, सुशील मोदी जी को ऊपर भी कितना आने दिया गया. हाँ. हमेशा तो नीतीश कुमार के नीचे. Exactly. It was always second fiddle. So now people only see him as second fiddle. तो वो प्रॉब्लम है बिहार के साथ. वो प्रॉब्लम है कि बिहार में अब दबाकर मेहनत करने की जरूरत है. इट्स अ ह्यूज स्टेट. You know, the political benefits of having a strong presence in this state is massive, whether you like it or not. कितना भी बोल लो कि अच्छा ये तो भैया है, ये तो पिछड़ा हुआ स्टेट है, but the political benefit of having presence in Bihar is massive. Plus, if you're able to develop Bihar, right, the way the BJP is currently trying to develop Uttar Pradesh, the economic benefits of developing Bihar are going to be monumental. इतना बड़ा स्टेट अगर डेवलप करेगा, इतना बड़ा स्टेट अगर मान लो महाराष्ट्र के लेवल पे पहुंच गया, गुजरात के लेवल पे पहुंच गया, भारत की काया पलट बदल जाएगी. आपको $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इधर से बनेगी, यहां से बनेगी सर. यूपी बिहार से बनेगी. या बिहार को बहुत यार, बिहार इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस. आई मीन बिहार को बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने को. मतलब और मतलब बिहार में आई थिंक दिस इज the last leg of the caste politics also in Bihar. Let's see how it goes. That's true. Nitish Kumar, and I feel like is the last of those sort of caste politics based leaders, but अखिलेश यादव भी तो वही करता है, और ये तेजस्वी यादव भी जो है वो भी तो यही करता है. He's also a caste leader. तो to say that it is the sunset of the caste politics in India, I don't know how true that is. And किसी ने बोला था कि I don't know if you agree with this statement or if you have any opinion on this, whatever, but somebody made a point कि Giriraj Singh was a popular leader in Bihar. He said Giriraj Singh was sidelined by Modi and Shah. यार मैं इतना इनसाइडर नहीं हूँ कि मेरे को इतनी नॉलेज हो कि मोदी शाह किसी को साइडलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं. गिरिराज जी मिनिस्टर भी थे ना? हैं? हाँ, मिनिस्टर भी थे. हाँ, तो वही है. अभी मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्स हिज नेम इज इन अ लॉट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. जो एलजेपी का लीडर है, जो बिहार का बीजेपी का एलाई है बिहार में, ये चिराग पासवान. Chirag Paswan's been going around doing a lot of interviews. He's at the forefront of basically attacking Nitish Kumar and Tejasvi Yadav in Bihar. So I don't know if the BJP is grooming him or if the BJP is taking a back seat and letting the LJP take the front position in Bihar, or is the LJP preparing to merge with the BJP in Bihar? I'm not entirely sure what's happening, but if you look at the news, whether it's NDTV, whether it's Times Now, whether it's Republic, he's everywhere. Chirag Paswan attacking and if you're talking about caste politics and if you want to find a Ramband for caste politics or Yadav based politics in Bihar, then if you're choosing a Paswan, you can't really go wrong. Yeah. So wo bhi hai. But we'll see. Let's see what happens. I think बीजेपी को अपना लीडर कौन सा चुनना है. सी एट द एंड ऑफ द डे द लीडर हैज ये भी अच्छा पॉइंट है. सिर्फ 2 सीट है एलजेपी का. सिर्फ 2 सीट है, क्या मर्ज करेगा. हाँ,
मगर I'm literally सीट like की वैल्यू नहीं होती है ना, वोट शेयर की हाँ भी वैल्यू होती है, वो कन्वर्जन में आता है ना। हाँ एंड सीट इट्स पे मत देखो पॉसिबल कि उनका वोट शेयर उनका, गिर गया हो या सीट्स गिर गई हो क्योंकि दे आर एलाइड विद द बीजेपी। तो वो भी होता है, ऐसा नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप वोट परसेंटेज देखो हर पार्टी की। अभी समझ लो, अभी जैसे हमारे ग्रेट रामदास आठवले साहिब हैं, जो सिर्फ पोइट्री बहुत अच्छी करते हैं, मगर उनका जो वोट शेयर है, वोट शेयर बहुत है, बहुत जो है महाराष्ट्र में बहुत मैटर करता है, या तो समझा करो। या हाँ वही है एंड अब हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं बट इट मैटर्स बेसिकली एवरीवेयर। इट मैटर्स इन कर्नाटका, इट मैटर्स इन महाराष्ट्र। यू नो जो जो कास्ट पॉलिटिक्स है और जो कास्ट इक्वेशंस हैं, देयर इज नॉट वन स्टेट इन इंडिया वेयर इट डजंट रियली मैटर। यू नो अभी फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जब तक एक इकोनॉमिक लेवल नहीं हो जाता देश का, तब तक ये फ्यूडल मेंटालिटी और या फिर ये फ्यूडल वो तो जो जोड़ उसके तोड़ बाद भी है रहती है। वो नहीं खत्म होगा। अरे उसके बाद भी रहती है, यहाँ पे नहीं है उसके साला, बाद भी रहती नॉर्थ है बट अमेरिका में। आप मैं क्या कह रहा हूँ कि देर आर बाहर कंट्रीज हैं ऐसी, जैसे इफ यू लुक एट यूरोप वगैरह में इस तरह के डिविजन्स हैं बट दे आर लेस प्रोनाउंस्ड बिकॉज एक सारे अलग अलग ग्रुप्स के पास एक लेवल का अब इकोनॉमिक पावर आ गया है। तो आई थिंक दैट इंडिया नीड्स दैट टू एन एक्सटेंट एज वेल। They need a level of economic strength for basically all communities to be like अच्छा ठीक है, now playing field जो है वो more or less level होता जा रहा है। That's I think where they need to go. But in देखो, any कास्ट देखते हैं पॉलिटिक्स लोकल होती, लीडरशिप डेवलप कास्ट होती है कि नहीं। पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स किधर नहीं जाती है, मगर क्या होता है कि आपकी कास्ट आइडेंटिटी क्या आपके मैट्रिक्स में प्राइमरी है, हाँ कि आपके प्राइमरी मैट्रिक्स में सेकेंडरी या टर्शियरी है, वो मैटर करता है। हाँ सो आपकी कास्ट आइडेंटिटी हो सकता है कि हो, मतलब मेरे केस में नहीं है, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है क्या कास्ट है क्या नहीं है, मगर मैं समझता हूँ लोगों के केस में होती है। मगर वो आपके मैट्रिक्स में किधर है ना, वो मैटर करती है, और वो कितना बड़ा फैक्टर है वो डिसाइड करता है आपका एक पॉलिटिकल। अभी जैसे अगर बीजेपी की विक्ट्री हो रही है, इसका मतलब कास्ट, जो आदमी बीजेपी को वोट करता है उसके लिए उसकी कास्ट आइडेंटिटी सेकेंडरी या टर्शरी है, प्राइमरी नहीं है। हाँ जो कांग्रेस को वोट करता है या सपा को करता है या भाजपा को करता है या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो इतनी भी कास्ट बेस्ड पार्टी है, उनमें उनकी वो आइडेंटिटी प्राइमरी हो जाती है और yeah दूसरी आइडेंटिटी सेकेंडरी हो जाती है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे हर जगह यही होता है ट्रेंड, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज हियर, बट हिंदुत्व in a way is also identity politics. This is what identity you want yeah to put as the primary identity. That yeah is the point. yeah चलो मिमीज करते हैं, मिमीज हाँ हाँ करते हैं फिर Q&A करेंगे थोड़ा सा। हाँ, मिमी करते हैं, और कृपा करके मिमी देखने के पहले once again a reminder to everyone, please support the show on Patreon. As you see the link, you can go on patreon.com/SSS Global World Nimbu Order. So go and support us over there. We try our best to read annoying papers and bring them to you, yes which none of you इस will do. इस हफ्ते कुशल ने सीरियस मेहनत की है। हाँ, बहुत मेहनत की है मैंने कमीनो। तो सपोर्ट करो हमको जाके उधर पेट्रियन पे। और अब मैं मिमी पेश करता हूँ। सो मिमीज पहला मिमी, पीला मिमी है कोई ट्विटर पे, ये है @बक। वॉल्यूम के साथ बजाना इसको। हाँ, बक अ डेथ। एक मिनट, वॉल्यूम, हाँ ये देखते हैं। Come in the name of peace. Come in the name of peace. Come in the name of peace. I have to make this. इस मीम को तो बहुत जगह यूज करना पड़ेगा। I'm gonna use this meme in a bunch of places. Come in the name of अरे वाह, आ गया हरामी, मिरेकल इंटरनेट ठीक हो गया इसका। मिरेकल एकदम एकदम सही टाइम पे आया तू। एक मिनट, तेरे को ना कुछ भेज रही हूँ हाँ भेजो भेजो। WhatsApp पे, because I'm obviously locked out of well, I'm not locked out, I'm just refusing to delete a tweet. I can delete it and come back on Twitter anytime, but that's not the point. Wait. हाँ तेरा अभी Let तक me- वापस नहीं आया यार ये नहीं तेरा कर रहा है को- कुत्ता। I feel like I saw a tweet from him like last week. No. Maybe I'm No. wrong. अच्छा
See, I can come back, right? They just Yeah, want but me only to if you delete that tweet, right? Yeah. Yeah, which I'm not refusing वो to. यही So anyway, करवाते हैं. This is what they make people do. ग्राउप्स पे मैंने तुमको भेजा है, अब अच्छा, चेक ड्रॉप्स करो. पे हाँ इधर ठीक है. ड्रॉप्स इस पे भेजा है. हाँ हाँ. अभी इसको कैसे शेयर कर सकते हैं कुशल? नहीं You मेरे send को it to him. You paste it, or you send it to Oh him on yeah. Twitter and he'll. Can I? How can I? Oh, okay. Wait. I'll paste it on Twitter, and then he'll be able to see it, right? ये अबे देखो ग्रुप किधर में डाला भेजा है ये कुशल. इसने? ट्विटर ग्रुप में कहाँ डाला है? ओ हाँ? या. हाँ, अभी डाला ना मैंने. हाँ. हाँ, अभी देखो. ये क्या है? ओह शिट. और पेश किया है. I am in a state of absolute euphoria while coming to learn that my esteemed colleague and Lok Sabha MP Shri Shashi Tharoor is being conferred upon the highest civilian honor of France, the Legion of Honor, for his extraordinary erudition and penetrative knowledge. Who the fuck writes penetrative knowledge with a straight face? This is your leader of the opposition, ladies Oh and my gentlemen. god. Who writes this shit unironically? I do not understand who writes this shit unironically. और वो भी उसी सेंटेंस में कमिंग भी डालना था. Oh my god, दुख. ऐसे कैसे लोग हैं? इसीलिए तो we were just talking about the BJP in Bihar, and maybe we'll come to that when we do the Q&A, because people were asking for your opinion. But we'll come to that when we do the Q&A, and I wanted to talk to you about something related to this as well. But we'll come to that. अभी मीमी करते हैं. I think you missed the first meme of Zelensky. या वो ठीक है. अच्छा, जो सेकंड जो तूने मेरे को भेजा ना, वो जिसने डाला था उसने निकाल दिया, वो ध्रुव टट्टी वाला. अच्छा, उसने निकाल दिया? Yeah. Oh no. Okay, so the तो next Reddit one पे था ना यार, Reddit था ना वो तो. हाँ, Reddit पे से निकाल दिया है. Reddit से डिलीट कर दिया. अच्छा. So illustrious_path 1889 ने मीमी डाला है चाचा. देखें क्या है. अच्छा. हेलो चाचा. हाँ चाचा. हाँ भैया बोला यार, रास्ता में ही गाड़ी चलाओ तो बोलो. चाचा. अरे यार कुछ बोल रहे, गाड़ी चलाओ तो ही रास्ता में भीड़ यहाँ बताओ क्या. चाचा. तेरी बहन के बुढ़मा चाचा चाचा कर रहा है, घोसड़ी की बोलत नहीं है. चाचा. अरे बोल बे, घोसड़ी वाले कौन है रे? Oh my god. यार उस लैंग्वेज में फील अलग आती है मेरे को. चाचा. Okay, next ये ट्विटर पे है. Fabulous guy, a leftist watching Lal Singh Chadda to save the movie to be a disaster. Okay. जो भी हरामी था जिसने ये चाचा वाला क्रैंक कॉल किया था. बस. Okay, let's see what a leftist is. अरे नहीं, पूरा थिएटर खाली है. क्यों? डब्बा है. तू टिकट दे यार. अपने को तो Anyway, कल मेरी मम्मी डैडी वापस आ रहे हैं. अगर मैं नहीं सोची तो ये गोवा जाने का आइडिया किसका था? क्या? मेरा. Really sorry guys. क्या बकवास पिक्चर बनाई है यार. मैं जाऊंगा. ये भी खत्म हो गया. ये सुकड़े समोसा दे. यार आजकल के डायरेक्टरों को क्या होता है कभी-कभी जब पिक्चर बनाई है या आपको तो फ्लॉट. अरे कुछ और करो यार.
कुछ और क्या है ये? पिक्चर भी खराब, समोसा भी खराब, चल कोल्ड ड्रिंक दे। जीनियस की ट्रेजेडी थी कि वो लोगों के पिक्चर भी खराब, समोसा भी खराब। ये फैबुलस गाय लाला फैबुलस गाय ने डाला है। गुड मीम। बढ़िया। ये अच्छा था। साला पिक्चर भी खराब, समोसा भी खराब। समोसा बहुत अच्छा होना जरूरी है। कमीने लोग। अच्छा, नेक्स्ट वन है डाला है सूरजीत मेधी ने, प्लीज डोनेट टू कुशल मेहरा एट ICICI लिखा। अरे क्या बात है, आई एम पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन दिस। पर्सनली इन्वॉल्वमेंट है। कुशल फर्स्ट टाइम विजिट ऑन हिज ससुराल, कुशल द रिच मैन। क्या है? आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? नहीं, फेसबुक पे अकाउंट किस पे है? SBI SBI भी है। फेसबुक पे अकाउंट ही नहीं है तो अकाउंट है किस पे? Good meme. It's a good meme. Happy end up, man. Good meme. HPC. Oh my God, really? किसी ने लिखा हुआ DRDO की कैंटीन। DRDO की कैंटीन। क्या कैंटीन? Abhijit will not get it, so Abhijit का explain अभिजीत कर पिछले पहले। हफ्ते था नहीं, he won't get it. Yeah, but we had a lot of fun with DRDO last week. DRDO, do you know they have a bund blasting device? Bund blasting system. ये क्या है? It's a real, ब्लास्टिंग सिस्टम। it's a real thing. हरामजादो, जरा मेरे को ट्वीट करो लिंक। Please tweet the link of the bund blasting missile. and penetration device also. Yeah, these are real things that DRDO has developed. कोई बहुत टर्की आदमी है DRDO में। Satire Sarti के बोला from the DRDO canteen, sweet bund, proud burger bund. DRDO What is a bund? You don't know what a bund is? Oh my goodness. Oh my goodness. Abhijit here. penetration cum blast. ये था penetration cum blast था. That was the other one. Abhijit doesn't know what bund means. Can someone ये explain? देखो भैया दो See, sweet German. Those sweet In German, it means union. So, you know, like in Bundesrepublik India it Deutschland. also means union, but in India it means the thing you have union the with. thing you have union with. Oh, That's a bund. okay. See, German and Indian are the Very same. close, very close. Bye bye. German, Hindi, bye bye. Look at this guy. Bundesgant in Punjabi. कितना technical explanation. Lavraj एकदम technically speaking. So Lavraj, So Mr. Jha, बुंडा कितना शरीफ होती है. कितना शरीफ होती है भाई साहब. Inventor. so mean. Poor Shashi. I think he must be having the loudest laugh with what Adhir Ranjan Chaudhary tweeted. भगवान, अब जिसके भी मम्मी पापा देख रहे ना ये शो. एक लाइव व्यूअर का कितना कंसर्न है, उसको अभिजीत के गे क्रेडेंशियल्स पे डाउट हो गया है. क्या गे बनेगा रे तू?
सालों में इतना गे हूँ कि तुम लोगों को पता भी नहीं है मैं कितना गे हूँ। भी नहीं पता ये गे बनेगा। क्यों गे होने के लिए हिंदी जानना पड़ता है क्या? तुम लोग क्या 1.4 बिलियन का नेशन हुआ है क्या? ये वर्नाक्युलर लोगों से बात ही नहीं करता ना, ये तो प्रॉब्लम है। वर्नाक्युलर लोगों से डील ही नहीं करता है। वो आदमी को अभिजीत के गे होने पे डाउट हो गया। तुमको बुड क्यों नहीं पता? सालों मैं बस होमो नहीं हूँ, मैं महा होमोराज हूँ, महा होमोराज। भगवान। मैं ढूंढता हूँ, अगर कोई भेजेगा नहीं ब्लास्टर, अगर कोई तब तक मैं भेजेगा नहीं। दूसरा दिखाता हूँ। It is दिखाओ। on Twitter by I_am_gustakh. It is called relatable. हाँ ये देखो, रुको एक सेकंड, ये देखो, ये देख अभिजीत। burned blasting device is burned blasting device. It's a man portable embankment blasting device designed and developed in India by the DRDO. It's a 100% real thing. No, but a bund is a kind of a dam. Huh? I know, but I know, but the spelling the spelling is just exactly like the same. Jammu and Kashmir had to come up with the abbreviation LAWDA. Lauda. Who comes up? Lakes and Waters Development Authority. Exactly. I mean, who the hell Lauda. does? We are Lauda. But remember, that's nothing compared to Pakistan, which came up with Randi, Piss, and Gandu. Yeah, that's true. That's No, true. they really did. That is also true. Yeah, this is true. He's right. Research and New Developments Initiative. Yeah. That was Randi. Then PIS was Pakistan Institute of Strategic Studies. And Gandu was... No, I'm dead serious. They called it PIS. And then there was Gandu, which was what? A geopolitical and something, huh? Yeah, I think it's देखो. This is totally real as well. Pakistan and China blocked think their name Randi. ये क्या देश है भाई? Honestly, what is this country? Is this country even real? I don't even know if this is a real country. यार, or if this उन्होंने Pakistan is award not a रखा है। country. It's a social experiment. Basically, the whole country is a वो social कंट्री experiment. का मेजर अवार्ड हिलाले पाकिस्तान है। हिलाले पाकिस्तान। अबे क्या? It's the highest civilian award. हिलाले पाकिस्तान. हिलाते रहते हैं। I don't know what this country is. Honestly, I honestly think it's just a social experiment. It is. It's a 100-year social experiment. उसके बाद they will rejoin India. पोला हो गया हमारा, पेट भर गया. Okay, so now let's go to the next meme, which is by I_am_gustakh. Relatable when mom finds cigarette in your pocket. भाई मैं तो पता नहीं, अभिजीत के लिए ये relatable. अभिजीत के लिए. फिर सुन ले, पहले सुन ले. ये सही है ना? नहीं पहले मुझे बता, मुझे ये नहीं पता. मैं पहले ये नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी देखी नहीं. ये कभी नहीं देखी आपने? अभिजीत, एक मिनट, पहले सुन ले. मम्मी पहले सुन ले बात. ये पहले कभी नहीं देखी मैंने. अभिजीत क्या तेरे साथ ये हुआ था? Yeah, it's relatable. कभी नहीं. Good meme. I like that Good. meme. Yes. I am अच्छा Gustaf. meme Good था. meme. Yes. Oh my goodness. Next one is Sham Sharma Show Reddit. Again, it is called This is Nice by Kon Chadi. It is a photo of Abhijit Iyer Mitra's best friend. Watermelon. This. Muslims, particularly Pakistani Muslims. अच्छा ये जो watermelon ने अभी हरकत की है. हाँ. ये तो हरामी आदमी है एक नंबर का कुत्ता. Are being targeted for assassination in New Mexico. The perpetrator is most likely a white supremacist, but would not be surprised if he's a Hindu nationalist.
Afghan man Muhammad Sayyed charged in killing 2 Muslims and Albuquerque, suspected in 2 others. Shabash. And he has still And you know not why he deleted killed the them? tweet. Of course not. Do Oh, you know why he why killed did he them? kill them? No. Because they were Sunnis who married into Shia families. Oh shit, really? Yeah. Wow. ये देख लो. Yeah. ये देख लो. ये चूतिया मतलब this चूतिया is also gainfully employed यार. मतलब आप बताओ मेरे को. You Look, tell I me mean, capitalism doesn't it's work. actually quite sad. You know, the thing about CJ Werleman is he used to be a Jewish supremacist. And then he got outed very badly for plagiarism, not once or twice, but repeat plagiarism over and over again. Really? And all his contracts and everything were cancelled. Because they proved systematic plagiarism. Just Google CJ Werleman plagiarism. Okay. So then what happened was he then claimed he had a catharsis, became a savior of Muslims, and they accept him as born again. This is, see, their heroes are essentially either outright frauds or gutter chaps like him who have nowhere to go, who do a transparently self-serving Hriday Parivartan or whatever, and end up like this. You know, Rana Ayub. Him and Trushki are your heroes. Like, seriously, man. This guy and Audrey Trushki. No, but he's a Muslim hero, no? For certain Muslims in India. So CJ Werleman and Ilhan Omar and Rana Ayub. Of course, Ilhan Omar. Who, by the way, gets booed in her own constituency. Boo, anybody can get booed. But Bhai Chodna, वो तो बहुत special skill होता है. नहीं मगर मेरे को मालूम है, पहली बार मालूम पड़ा है उसका नाम कैसे प्रोनाउंस होता है वेलर. मैं उसको आज तक वाटरमेलन ही बोल रहा था. मैं तो वाटरमेलन ही बोलता हूँ यार. I don't even know. Watermelon. मैं तो उसको वाटरमेलन ही बोलता. मेरे को उसका नाम ही नहीं मालूम. CJ Watermelon. It's easier. I think it's definitely easier. I think you should go with that. Just a little bit of free advice. Go with watermelon. It's a branding. And you can put watermelon in all your thumbnails. You can put a watermelon in your profile picture. You can put a watermelon on your business card. You can be like, here, my name is CJ Watermelon. Tarboos. Yeah. अभी next वाला मीमी है भाई toxic_curry. It is called Nitish Kumar with दीदी का इंतजार मुझे. दीदी का इंतजार. नीतीश कुमार बीजेपी के साथ. नीतीश कुमार से नहीं तो अल्लाह से डरेगी. ये वापस देखना मेरे को, ये तो बहुत ही डीप है. तो डीप है. नीतीश कुमार में नीतीश. Last one is my favorite. Nitish Kumar with Nitish Kumar. Good name. देखो मैं तुम लोगों को एक और वीडियो भेजा है. हाँ, एक और वीडियो की तो भेजे है. मैं अभी देखते हैं और शेयर करते हैं. वही व्हाट्सएप पे. ओके. मैं देखते हैं, अभी शेयर करते हैं. नहीं मेरे को मिल गया है. मैंने व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे खोल लिया है. वो थोड़ा अच्छा डाउनलोड होने को टाइम लगेगा. हाँ, ये सही है. ये सही किया. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही काम किया है आपने. अबे अच्छा रुको. हाँ. अभी हम शेयर करता हूँ. क्या भेजा है तूने व्हाट्सएप पे? हाँ देखें जी. हाँ ये है ना. प्यार के फूल बरसाता लालू परिवार. एक मिनट, मैं ऑडियो सिलेक्ट किया था कि नहीं बराबर से, मैं भूल जाऊं इसके लिए. इसमें ऑडियो आएगा कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है यार. ट्राई करके देखो. नहीं आता तो कोई बात नहीं, देखते हैं. मीमी ही देखेंगे. आ रहा है ऑडियो? नहीं ऑडियो नहीं आ रहा. नहीं ऑडियो नहीं आ रहा ना. ओके ऑडियो नहीं आएगा. वो राइट हैंड साइड में ऑडियो है ना.
राइट हैंड साइड में वो हाँ 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 नहीं वॉल्यूम नहीं तो फुल मेरे है, को वॉल्यूम आवाज तो आ फुल रही है, है। मेरे को आवाज आ रही है, उसमें नहीं आएगा। इनको आ रही है, वो शेयर में नहीं आएगी। आई थिंक देयर सम इशू विद द शेयर फंक्शन। हाँ वो सेव करके ट्विटर पे भेजो, वो फिर उसमें आएगा। हाँ मैं वही करता हूँ। तो मैं शाम इसको तू डाल, तब तक मैं दूसरा मीम शेयर करता हूँ। दिस इज बाय डॉक्टर सर राहुल गांधी एंड इट इज टाइटल नीतीश कुमार फॉर्मिंग न्यू टाइज बी लाइक। तो वी आर ऑन द थीम ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर ही है आज। हाँ सर, नीतीश सर ने बहुत अच्छा काम किया ना। देखिए नीतीश कुमार फॉर्मिंग टाइज कैसा है। आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रूबीना मैं तुम्हारे साथ, और फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, आज अगर हिम्मत बची तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो वापस देखना पड़ेगा। आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रूबीना मैं तुम्हारे साथ, और फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत बची तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो सेंड कर दिया, धीरे धीरे आ जाएगा वीडियो आपके पास। ओके हाँ हाँ चलो सेंड हो गया ट्विटर पे। हाँ अभी वो आने को टाइम लगेगा 2-3 अच्छा। मिनट। हाँ और क्या था, तब तक के लिए मैं दूसरा भी एक और दिखा देता हूँ इधर मीमी रिव्यू का। ओके ये फोटो है, इट इज कॉल्ड आपकी आईटी सेल बाय द फर्स्ट लाफ। हाँ जी आपकी आईटी सेल, आपकी आईटी सेल भी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वेरी ये देखो स्ट्रांग। प्रशांत सक्सेना, despite being a Gujarati and a staunch BJP supporter, I have to admit that this Kejriwal guy has done significant damage to the BJP. Oh my God. Won't be surprised if AAP crosses the 80 seat mark in the coming elections. Being a Himachali Bilaspur district, I can say this with full responsibility that this survey is still underestimating AAP. Everyone in town nowadays talks about Delhi education model and 1,000 women scheme. Results will be surprising to many. being Prashant Saxena next month, being an American from Texas, I can say with full responsibility that Americans are really underestimating AAP. Everyone in Dallas is talking about the Delhi education model. 4 महीने से 4 महीने में हिमाचली से गुजराती बन गया भाई। ये अभी भी है क्या ट्विटर पे? I don't know. अरे यार कुशल, ethnicity is a social construct. It's not a real thing. Yeah. Ethnicity is a social construct. It's not real. Okay, एक मिनट, अभी हम शेयर करता है वो वीडियो, हम वीडियो शेयरिंग करेगा। ओके अभिजीत का ये वाला वीडियो था ना, इतना बड़का पार्टी है, दिख रहा है ना? ये अभी दिख रहा है। हाँ अभी देखते हैं। अंदर में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। अच्छा घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से पागल हो गया है। काम किया झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है, पागल हो गया। इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। अब हमारे चाचा को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो कल को अगर हम गलती से ले लें उनको, तो जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो, तुम भी पलट गए। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान भी नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। भूल जाते हो नीतीश कुमार कि तुम्हारी हैसियत क्या थी। खुद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था, नीतीश सांप है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे नीतीश भी केंचुल छोड़ता है, और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है किसी को शक। नीतीश कुमार जी को अकबका गए थे, हाउस में नहीं देखे थे कैसे अकबका करके अनाप शनाप बयान देने लगे थे हम लोग के बारे में। तो केवल नीतीश कुमार जी वही कर सकते हैं। बिहार में जो अपराध का जो तांडव बचा हुआ है उसको नीतीश कुमार जी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उनका ताकत खत्म हो गया है। इसलिए हम उनको मथुरा वृंदावन झोला उठा करके चल जाना चाहिए। अब आप बोलिए क्या होगा इसके बाद, ये अलायंस रहेगा नहीं? अलायंस कहाँ कभी आएगा एक बार फिर कोई महागठबंधन हो पाएगा? अब महागठबंधन नहीं होगा, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार से तो कभी आप कोई हाथ नहीं मिलाएगा। अरे इसमें यार आरजेडी को क्या ब्लेम करना है, सारी पार्टी करती हैं। कौन सी पार्टी, बीजेपी ने कितनी बार कर रखा है यही काम।
सारी पार्टीज करती है, but it is enjoyable to watch. It is funny to watch. ताकत नहीं है तो शिलाजीत खाओ। शिलाजीत खाओ, सही बात है। चलो नेक्स्ट वन इज, क्या होता है भाइयों? शिलाजीत से ताकत आता है, स्ट्रेंथ, ताकत आते हैं। अच्छा, टट्टी नहीं आती। एक मिनट, नहीं, इसको टट्टी की प्रॉब्लम है, इसको लगा वो। देखो अभी नेक्स्ट वाला है सूरजीत मेधी, फादर रेबोट सुपर। ये क्या है? ये बहुत गलत किया ये जिसने भी बनाया है। ये क्या है? ये स्क्रीन पत्ती ने बनाया ना शायद। टीएसपी तो स्क्रीन पत्ती है ना, आई थिंक। हाँ, देखते हैं क्या है। डांस से टीवी, टीवी से मूवीज और मूवीज से वापस टीवी में स्ट्रगल करने वाले वेरी टैलेंटेड फ्रॉम कुर्लाइस, रेमो मूवी से दूर जा। ये क्या हो रहा है? कहाँ से आप? सर मैं शकूर बस्ती दिल्ली से हूँ सर, गरीब हूँ सर। इसको देख, वो चावल गया। ये क्या था लास्ट में? ये चावल लेके पहुंच गया। गरीब है, गरीब है क्या? लेके पहुंच गए रे। और वो ताली मार रहा था। फादर क्या मीम बनाया भाई, ए भगवान। अरे यार, वेल डन स्क्रीन पत्ती। अरे ये तो सेम अभी ये अभिजीत ने जो वीडियो दिखाया वही है ये। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, दूसरा लगा दो फिर। हाँ तो हाँ, अच्छा ये क्या है? गोलमाल है भाई। ये देख, आयुष आनंद बोल रहा है, किधर गया? इस्पा घुला हस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है भाई, मैंने बोला था ना, कॉन्स्टिपेशन के लिए है ये सब। इस्पा घुला, यस। ओके सो इसबगोल ना, इसबगोल। हाँ, इसबगोल। कुत्ते क्या नाम बोल दिया तूने? अच्छा, ये सटायर सारथी का है फोटा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ तो क्या गोलमाल है? चपाती गैंग आफ्टर सीट। नो मोर। क्या? अरे भाई मैथ्यू, अरे क्यों चावल से दुश्मनी कर रहा है? मुझे भी चावल अच्छा लगता है। Matthew is one of the best sports we have on the channel. Yeah, he's a good guy. Shout out to Matthew. So a regular viewer of the show. Yeah. Jesus saves Matthew. Jesus saves Matthew. चपाती गैंग। ये देखो, आपको गाना सुनाई दिया? ए तू साइन कर रहा बाबा, जल्दी साइन कर। This is a great meme यार। Well done, Shattar. Happy enough. Full happy enough, 100% marks। आपको गाना सुनाई दिया? ए तू साइन कर रहे बाबा। Good meme यार। This is a very good meme. Excellent. ये डीप मीम है, बहुत डीप मीम है ये। अभी ये है, तू साइन कर रहे बाबा। अच्छा, अरे वो हेरा फेरी का सीन नहीं याद है? लोग कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हो यार। हेरा फेरी नहीं देखी तुम लोगों ने? किस तरह के हिंदुस्तानी हो लोग हैं ये लोग, यूजलेस लोग हैं सब। शर्म करो कसम से। हेरा फेरी नहीं देखते फिर बोलते हो इधर आ जाते हो शो देखने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वन इज बाय सूरजीत मेधी। इट इज कॉल्ड अभिजीत अय्यर मित्रा आफ्टर गेटिंग ट्रोल्ड इन मीम्स। हाँ भाई, अभिजीत क्या बिहेव करता है, देखते हैं। क्या करता है ये? व्हाट आर यू डूइंग अभिजीत? ओह शिट, अभिजीत क्या है? कम से कम मेरा नेम तो ठीक से स्पेल करो लवड़ो। अभी ये देखो, नफरत को मेरी
something I would do, by the way. वापस क्या बकवास है यार हे भगवान oh my god oh shit shit अभिजीत कैसा कैसा ऐसे kid oh my god. अच्छा, this one is on the Sham Sharma show Reddit by Fing_N. BTS Modi is the title. अच्छा, मोदी के लिए, very good. BTS Modi. Learn Korean in 30 days fast. After 30 days. आयोंग आसेयो बहन के लोड़े एक मिनट वापस. आयोंग आसेयो बहन के लोड़े. ये किसने किया मोदी के साथ? डाला है किसने डाला? इसका नींद तो ये सालो नेशनल लीडर के खिलाफ ऐसे मीमी बनाते हो. नेशनल लीडर का मजाक उड़ाते हो कभी ना. Fing_N. इसको 100 सल्यूट का सलाम. सल्यूट. Learn Korean in 30 days. Oh my god. Okay, सटायर सारथी ने लास्ट वाला डाला है. चारवाक पॉडकास्ट इन 10 seconds. देखें जरा क्या है हरामजादो. तो सटायर के बहुत सारे आ गए आज. मैं रो क्यों रहा हूँ? हरामखोर, ये क्या है? ट्रू. यस. अरे भाई ने बोला ना, भाई के पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, सिर्फ ICICI अकाउंट है. Good meme. बढ़िया वर्क सटायर द्वारा. Good job सटायर. ये अच्छा था. चलो जी, सारे मीमी हो गए. अभी रुक जा. अगर अभी एक लास्ट वाला बचा है ना? नहीं, सारे हो गए. अच्छा, सारे हो गए. अच्छा, मेरे को तो जितने तूने भेजे थे सारे. अच्छा, कोई नहीं. मैं देखता हूँ अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन निकालता हूँ मैं. I think आए थे 2-3 क्वेश्चन. Let's take a few of them. भाई साहब, वैसे पता है there is a किसी ने ट्विटर पे भेजा है, there is a bund garden. Even Pune city is killing it. वासवानी नगर. अम्मा, bund garden in वासवानी नगर. क्या बात है. चलो, you know there's something called a bunt cake, but it's got a yeah, T but at the it's end of the D. BUNDT, right? Yes, that's what I said. It's got a T at the end of the D. But same thing. एक लफ्ज का की फर्क पैदा है. एक लफ्ज का की फर्क पैदा है. ये सवाल है अभिजीत के लिए तुषाराद्री मुखर्जी से. तुषाराद्री से उसके पहले मेरे को कुशल का एक सवाल है. साले तो क्या प्लास्टिक पे बैठा है क्या? अरे ये थोड़ा अरे वो साफ कर रहा था तो मैंने वो प्लास्टिक लगा दिया. बाद में मेरे पास टाइम नहीं था. लवड़ा साला. Are you actually on plastic? नहीं, मैं तो सोफा था, मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया. मैं बेसमेंट में हूं. प्लास्टिक डाल दिया सोफे के ऊपर. हाँ, मैंने प्लास्टिक डाल दिया उसके ऊपर.
Who has a better chance in 2024, Trump or DeSantis? What do you think, Abhijit? I would say DeSantis. Yeah. Yeah, I think Trump's But then I think base the is very FBI dedicated, thinks, but it's small. But I think the issue is these people, the FBI might be trying to give it back to Trump. Might be trying to give it back to Trump. Why? With the raid at Mar-a-Lago and things like that. Yeah. Right. So imagine this woman, Hillary Clinton, had so much classified documents. They never raided her. Yeah. And did you see what she tweeted after they raided her? They raided him. What did she say? Wait. Let me send you. This is great fun. The woman is so shameless. It's not even funny. रुको मैं भेजता हूँ तुम लोगों को. एक सेकंड. इसको सेव कैसे करते हैं? हाँ. अब मैं इधर से भेजती हूँ तुम लोगों को. ये डालो भाइयों. भेजत हो हम. भेजा. मिलत है का? हाँ. आ गया. हाँ. भेजेलू. मिलत हो का? Okay, please don't speak even vernacular. Yeah, इधर अभी vernacular बोल रहे बहुत. Every but her बत्ती से आचारत है. What is she saying? Every but her emails, hat or shirt sold helps onward together partners defend democracy, build a progressive bench and fight for our values. Just saying shop. She's selling but her emails. She's selling merchandise like a YouTuber. You know, her emails, she had so many classified emails. Yeah. Oh my All the God. classified emails that she'd saved up. Yeah, not let's not talk about but her emails, but let us definitely talk about. But what about her husband's trips to Epstein's Island? What about that? What about that painting of her husband in a dress that was in Epstein's house? What about that? What about all of those things? Yeah, but no, let's just focus on your emails, madam. Hey, this is very interesting. Sham, did you see Monty Paneser's? Did you see Monty Paneser's tweet on ये boycott Lal Singh Chadda? Very interesting. क्या बोल रहा है भाई? Okay. Monty Paneser भी अलग ही. अरे तो ये एंगल कहाँ से आ गया? इसके लिए तो मैं इतना हंस रहा हूँ. क्या भेजा? ये एंगल देख. Forrest Gump fits in the US Army because the US was recruiting low IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is a total disgrace to Indian Armed Forces, Indian Army and Sikhs. Disrespectful, disgraceful. Boycott Lal Singh. ये भी boycott बोल रहा है. मैं दूसरे एंगल से boycott करूंगा. मैं normal एंगल से नहीं कर सकता boycott. इसने तो नया एंगल ले आया. नया एंगल है. अबे खालिस्तानियों को भी तो खुश रखना है ना. तो ऐसे सामने से boycott नहीं कर सकते. कान ऐसे नहीं पकड़ सकते. हमको कान ऐसे पकड़ने हैं. बॉयकॉट भी करने हैं लेकिन स्टाइल से करने हैं. दैट्स द मेन पॉइंट. और क्या क्वेश्चन है? Why is there no firebrand politician like Yogi ji in Bihar for BJP? Pinky Kumari is asking. Pinky, I think we've already gone over this. Essentially, वही है कि BJP has always chosen to depend on Nitish Kumar as a leader. Maybe they have. It's not like they don't have politicians. They have not let them come up. Now with this entire clusterfuck ending, they might. They might have no other situation. ये थोड़ा base effect हो जाएगा इसमें. Yeah. और क्या question है? राणा ईयर में नहीं वो. This is an interesting question. किधर है यार? हाँ. This is from Diablo del Fuego. He's asking, can you think of any situation where caste politics has had any positive effects, even unintentionally? Otherwise, why does caste politics continue to survive in India? Nothing. The only thing was because India was such a stratified caste society that for
your caste to be heard and you being given a voice, caste politics was a natural way to come up. So every caste started having their own leaders, and Yeah. if your caste was electorally relevant in a certain area in terms of population and numbers, you Yeah. formulate a caste party. So that is the only unintended consequence. The consequence being that sometimes people who are marginalized also got a voice. Yeah. So that's the thing. Dhruva Mukhopadhyay is asking, and we got a lot of questions about this, Abhijit, last week, where people were asking, what do you think is going on with the China-Taiwan situation? Can we see a situation in the next couple of years where the China can realistically invade Taiwan? See, they can invade. The question is how much. Even now, technically, they could, if they throw everything at it, they'll win. The question is China willing to do to Taiwan what Russia is willing to do to Ukraine? ठीक है, ताइवान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है. The question is how Really? long के लिए ताइवान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है. I mean, honestly, I personally think if they started an invasion of Taiwan, it would take them at least 2-3 years before Taiwan collapsed. Just Wow. getting to Taiwan alone, crossing the straits and things like that, right? They need lots of small boats with platoons and things like that, because big boats, the Taiwanese will take them out with anti-ship missiles. So it depends on how much you're willing to lose internationally and how much you're willing to lose troops and things like that. China used to have a great propensity for accepting losses. I don't know if they still have that anymore. Right. Anish Joshi is asking a very important question. Abhijit was being very polite in the Pondi Fest trailer. Is that a paid actor or is that actually Abhijit? अरे पौंडी वाले तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं क्यों उधर गाड़ी दूंगा. हाँ. Yeah, people were very surprised that people were thinking that's not actually Abhijit. That's actually just a paid actor who's been paid to play Abhijit because he's being overtly polite in the trailer. नहीं, मैंने जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बोली और मैंने बहुत सुंदर गालियां दी है. जब वो अपलोड होंगी तब देखना जरूर. कभी अपलोड होंगी ये भी बता दो ताकि लोग जाके देखेंगे. पौंडी लिटफेस्ट को फॉलो करो YouTube पे, जब अपलोड होंगी तब अपलोड होंगी. पर So go follow the Pondi Litfest channel and make sure to press that bell icon. तो जब भी अपलोड होती है वीडियो, you'll get a notification for it. मैं शिवरूर को भी इंटरव्यू की उसके नई बुक पे. It's a really scary book. At least the first 2 chapters are super scary. Because he went and interviewed everybody who fought at Galwan. It's India's most fearless. So see, it's archiving. Normally what happens is they'll talk about bravery generically, and because it's all videos, nobody actually archives these things. Yeah. So he's producing things, India's most fearless 1, 2, 3, which are all documenting individual stories, right? It's going interviewing the soldiers who took part in everything. This is part 3 releasing. Yeah. And it's talking about the people who fought at Galwan. And it's also interviewing the one survivor of General Rawat's air crash. Oh, wow. Yeah. Okay. Somebody mentioned, so we'll end today's video with this. ये question अच्छा है, Sham. Given the China situation, shouldn't Japan reinstate their armed forces fully? Look, the Japanese armed forces are very strong, boss. They just don't call their armed forces an armed forces. But other than that, they're extremely strong. Okay. Make no mistake about it. In terms of tonnage, they're probably the second heaviest fleet on Earth. Really? After the American fleet. Yeah. Wow. Some 50-60 destroyers almost. Yeah. Wow. So they're heavily armed. And remember, Hitler couldn't capture Britain, which was just 50 kilometers away by sea. Yeah. Okay. So imagine how difficult it is for the Chinese to capture Taiwan, which is 180 kilometers away by sea. And then you imagine how difficult it is for China to capture Japan, which is about 500 odd kilometers away by sea. Yeah. Don't estimate the Japanese. They're extremely powerful. They've got some 18, 19 submarines, very sophisticated submarines, very sophisticated surface fleet, very sophisticated air force.
We'll finish today's video with this comment. This is from Shravanveer Kohli. Shravan says, Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute is called TATI. It's a legitimate institute. It is. उसका वीडियो भी दिखाया था मैंने. TATI का. I am really thankful to Tate. Yeah, that's right. That's right. I'm very thankful to TATI. I remember that. Really? Yeah. Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, aka TATI. That would be Tanati. Tanati? Advanced TA? Not TATI. No, T. Yeah, I suppose Tanati. But I think they call it TATI. क्योंकि वीडियो में तो TATI बोल रहे थे ना? नहीं वो लोग उसका TATI खुद बोलते हैं. हाँ, वीडियो में TATI बोल रहे थे. नहीं. Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. For अरे उसका मार्केटिंग में वो उसको टट्टी बोल रहा मार्केटिंग में था. टट्टी बोल रहे थे जो लोग उसके वीडियो को प्रमोट कर रहे थे वो टट्टी बोल रहे थे. I want to thank Tati. Tati is so nice. Tati helped me a lot. Oh no, they actually call it. Their website is tati.in. I kid you not. Wait, I will look. I kid you not. Their actual website is. I just Google search and bring up the screen. It's tati.in. Tati.in. शाम खोलियो जरा. Sharing. मैं खोल रहा हूँ. मेरा इंटरनेट इतना स्लो क्यों हो गया अचानक से? हाँ, पता नहीं क्या. सर अभी ये क्या है? नहीं रुको. मैं शेयर कर रहे हैं. Can you see? हाँ मगर तू वो पेज ओपन करना. पेज ओपन कर फिर मैं ऊपर लाऊंगा. Bring that page. ये देख. दिखाई दे रहा है. हाँ. दिखाई दे रहा है. Skill enabling up and not Tati. Yeah. See, it's real. Tati.in. Tati.in. Even on Google, look on the right side. Even on Google, it's Tati. Even on Google, it's known as Tati. They are all proud Tatians. What the hell, man? कहाँ से graduate किया सर? Tati से. Sir, I'm a proud graduate of Tati. Oh my God, amazing. Man. Brilliant. Good. Dude, they actually have a website called tati.in. Does nobody in Tamil Nadu know what Tati means? No. You gotta appreciate the brothers there and the sisters there. They did not give a fuck. They're like, we're going with Tati. हम तो Tati बोलेंगे सर. क्या करना जो खाना खा लो. हम तो Tati बोलेंगे. It's like tatte idli in Karnataka. Tatte. This means to जैसे चपाती बनाते हैं ना, जैसे वो हाथ में चपाती बनाते हैं ऐसे करके. कई tatte means to clap. Tatte idli. Tatte is plate. Tatte is to flatten using your hand. So it's like जैसे काउडंग को लेके ऐसे flatten करते हैं ना, to put it up on the wall. So बोलते हैं ना कि टट्टी को टट्टी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया इज वन. उसी तरह से कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, लवड़े से लेके टट्टी तक. We have the entire spectrum India. लवड़े से लेके टट्टी तक. So we'll leave the video today. लवड़े से टट्टी तक. And before we but they changed the name. They changed the name of Lavda. They changed. Yes, Tati will remain Tati, but Lavda they changed. And before we go, I just want to remind everyone once again. I want to share that very important research paper again. If you missed out, please always remember this is how research should be done. Oh my God! I'm not alone. We are all. इतना छोटा subculture in Japan. Always appreciate Carl Anderson. इसने 3 महीने मुठ मारी कॉमिक्स के ऊपर to write this paper. Okay, we're not finished yet. I have more things to show you. Wait. Oh my God! Look. Oh my God! Ashish Chauhan. There is a place in Pune called Bhosri. First time my friend traveled via bus, the conductor says, "Bhosri wale utro." Yeah, आ चुका है पहले. I checked. There is actually a place called Bhosri. Brilliant.
But here's wale. the issue. Yeah. Here, so there is actually a university in India called TITS, the Technological Institute of Textile Sciences in Haryana. No, there is. Check it out. The Technological Institute of Textile Sciences. Tatti to ye hai. Then there is भिवानी में. What the hell? It's भिवानी. अरे मैंने निकाल लिया, रुक जा. अच्छा निकालो. फिर एक और भी है. ये देख. It's भिवानी. It's भिवानी. और मार्केटिंग में क्या मतलब टिट लिखा हुआ है. क्या बात है. It's भिवानी. Shabash. Apparently there is a female and saying I'm a student of TITS. I'm from TITS Bhiwani. Okay. There is a Lund University in Europe also. वो तो स्वीडन की है. वो तो स्वीडन की है. स्वीडन वाले तो Lund समझ University, yeah. So there is also a college called Potty College. Potty College. No, there is. The full name is Potti Sriramalu College of Engineering and Technology, PSCMR. PSCMR College of Engineering and Technology, but it used to be, before they figured out what it wasn't pronounced as Potti Sriramalu, it was pronounced as Potti Sriramalu. So they changed it to PSMCR, but before it used to be just called Potty College. Oh my God! No. Yeah. ये देखो. एक और मिला मेरे को. ये देखो. चुटिया. This is in Ranchi. चुटिया. In Gosaitola in Ranchi. मगर उसको देख, हिंदी में पढ़ेंगे तो परफेक्ट होगा. वो चुटिया होगा. हिंदी में चुटिया है. चुटिया होगा. ट होगा, त नहीं होगा. Yeah. हिंदी में ये देखो एक और आ गया. Dildo is literally city name in Newfoundland and Labrador, Canada. I live in Dildo, Canada. शाबाश. Very nice. अगले हफ्ते हम लोग को इसी तरह की एक लिस्ट भेजना. Next week, email us or tag us in a list of the best funny names for places and institutes and colleges that you've heard us. And अगले हफ्ते we will read them all out. Apparently in Ranchi, near your home, Sham, there's a place called Chutia. Yeah, वही तो दिखाया मैंने अभी. In Gosaitola, yeah. There's one in Gosaitola, yeah. So next week, send us some more names. And there's an Assamese surname. Huh? There's an Assamese surname by that name. There's an Assamese surname called Sutia, but it's written Chutia. So it's how Saikia is pronounced Hoikia. S is pronounced as H. So they write it Chutia, but it's pronounced Sutia. Oh, interesting. Yeah. So Potti Sriramalu is a Potty College. Yeah. There you go. So send us some more names next week and we'll check those out. Baki, thanks again for joining us. Make sure if you're not supporting us yet, if you would like to, support us on Patreon. It's patreon.com/SSS Global. Next week, we will meet again. Hopefully, you'll send us some good names. Hopefully, keep sending us the good memes if you want to get featured. The link for the subreddit is in the description of this video. Go join the subreddit and send us your memes there, and we will do our best to review the best memes that you send to us next week on the show. Until then, stay happy, stay tatti. We'll see you next week. Until then, tata, bye-bye, Jai Shri Ram.